Hello everyone, welcome back to NCERT EVS class 3. In the previous class, we have covered chapter 2, that is plant fairy. In the chapter, we discussed about the types of plants, their features, their textures. Then we discussed the types of leaves, their shapes, their different colors, their margins. Yes. In the second part of the chapter, we discussed some activities like smelling the fragrance of different leaves, uh, making different pictures with the help of dry leaves, then rubbing over the leaf and trunk of trees to get the impression over a white sheet. In the end of the chapter, we discussed some exercise which were given in the book. Today, we will go through some extra exercise. Yes, let's start. प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर के कंटेंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्लांट्स के टाइप के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, फिर हमने लीव्स के बारे में डिस्कस किया था, उनके डिफरेंट कलर्स के बारे में, उनके शेप्स, उनकी मार्जिन्स। सेकेंड पार्ट में हमने कुछ एक्टिविटी डिस्कस करी थी, जिसमें हमें डिफरेंट प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके फ्रैग्रेंस को स्मेल करना था। फिर हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी डिस्कस की थी जिसमें ड्राई लीव्स के की मदद से आपको कुछ पिक्चर्स बनाने थे। फिर ट्री ट्रंक और लीव्स के ऊपर पेपर रख के, पेपर प्लेस करके उसके ऊपर रब करके उनका टेक्सचर का इंप्रेशन लेना था। चैप्टर के एंड में हमने कुछ एक्सरसाइज डिस्कस किए थे जो हमारी बुक में दिए गए थे। आज हम कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करेंगे। Okay, let's start. Worksheet. Chapter 2, the plant fairy. Give one example of. यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का, ये प्लांट्स के टाइप पे आधारित है, उस पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं, उनके एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ प्लांट्स and their classification in detail when we were discussing the chapter. जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वहां हमने काफी डिटेल में टाइप्स ऑफ प्लांट डिस्कस किया है, उनके एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं। तो हियर यू हैव टू राइट वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप ऑफ प्लांट। हर्ब, grass, shrub, hibiscus, climber, money plant, tree, mango, creeper, pumpkin. You can write some other examples also. Next part is also based on the types of plants. Describe the following in one sentences with example. यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ जो types of plant हैं उनको one sentence में, एक sentence में आपको उनको define करना और हर type का एक example देना है. Herbs. Very small plants are called herbs. Example mint. Shrubs. Bushy plants are called shrubs. Example rose. Trees, very big plants are called trees. Example neem. Climber, plants that need support to stand or climb. Example peas. Creepers, plants that grow along the ground. Example watermelon. Yes, here also I will repeat the same. You can write some other examples also. Write true or false for the following statements. While we were discussing the chapter, जब हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या देखा था, हमने क्या डिस्कस किया था कि उस चैप्टर में द प्लांट फेरी में एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन थे जिन्होंने बहुत सारे गेम खेले और बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमने कंटेंट्स डिस्कस किया था आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है एंड देन यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द corresponding statements. Leaves are of different color and margins. Leaves जो हैं वो different colors के होते हैं, उनके shape भी अलग अलग हो सकते हैं, उनके margins भी अलग अलग हो सकते हैं. This is true because हमने ये discuss किया था कि उनकी shape जो होती है कोई circular होती है, triangular होती है, color भी कोई green है, कोई red है, कोई light green है, कोई dark green है, किसी के ऊपर green के साथ साथ white patches हैं, तो color भी अलग हुए, margins किसी में even margin था, किसी में uneven, किसी में saw like. So this is true. Very small plants are called shrubs. False, because very small plants are called herbs. Next, aloe vera leaves have saw-like margin. Yes, this is true because we have already discussed aloe vera leaves as an example of leaves with saw-like margin. Next, their arm was holding a tree with thick trunk. False, because their arm was holding a tree with thin trunk. In the second round of the plant fairy game, Didi asked everybody to touch a tree either with a thick trunk or thin trunk. Then their arm was holding a tree with thin trunk. All leaves are green. We have already discussed this point also. Leaves are of different colors. सारे जो leaves होते हैं वो green नहीं होते हैं, हमने उनके different colors को discuss किया. So this is false.
Let's come to the next part. Who said the following? ये जो स्टेटमेंट्स है ये किसने किसने दिया था? यहाँ जो हमारा चैप्टर था इसमें हु सेड द फॉलोइंग में आपको देखना है कि जो बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था, वहाँ ग्रुप ऑफ किड्स थे, चिल्ड्रन थे, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था। वे जब प्लांट फेरी गेम खेल रहे थे तो आपस में बातें कर रहे थे। तो आपको उनकी कम्युनिकेशन को रिकॉल करना, स्टोरी को रिकॉल करना है कि गेम जब हो रही थी उसके दौरान ड्यूरिंग द गेम ऑफ प्लांट फेरी हु मेड which statements. Yes, the first one is, let's play a new game today, Didi said to start the plant fairy game. Didi, you are sitting on very little plants. In the end of the first round of game, when Didi asked everybody to notice that everybody had touched a different plant, all the plants touched by different kids were different from each other. Then Shabnam noticed that Didi was also sitting on a different plant and it was a very little plant. I also want to become plant fairy. It was said by Michael as Michael noticed that this was a very interesting game. Plant fairy could order anybody to do anything. So he wanted to become plant fairy. I didn't know that leaves are of different types. In the end of the third round of the plant fairy game, when Michael asked everybody to collect the leaves and everybody collected leaves, then they found that the leaves are of different colors, different types. Yes, Dayaram said. They are of so many colors as well. Amu noticed that they are of many colors as well. उनके colors भी अलग अलग हैं, तो अमू ने ये statement दिया था. Let's go to the next part. Match the following. Here once again, very similar exercise is this. Here in the first part, one example is given. Okay, the name of plant is given, and you have to match those plants with their corresponding categories. Like grass will go to the category of herb, jasmine will go to the shrub, watermelon to the creepers, neem to the trees, and money plant to a climber. Next, draw a plant and label its part. What you have to do, you have to draw a plant and label its part. While labeling the parts, you can also label that the part of the plant that is under the ground is root, and the part that is above the ground is called shoot. So in the shoot part, the leaf, stem, flower, bud, and fruits, everything come in the part of shoot. Let's go to the next part. In the next part, here, what you have to do, you have to draw a leaf and label its part. यहाँ पे आपको क्या करना है, एक leaf draw करना है और उनके parts को आपको label करना है. यहाँ पे मैंने already leaf के parts को ये कर दिया है, label कर दिया है. आप भी चाहें तो आप एक बार इस वीडियो के को go through कर सकते हैं. In the next round, the second round, we draw the leaves by your own and label the parts by your own. Yes. Next is, write 5 things we get from plants and trees. As we have already discussed, then plants and trees are very important for us. We get so many things from plants and trees. You have to write 5 things that we get from plants and trees. Here are some I have written: fruits, vegetables, oxygen, food, and medicine. Oxygen is one of the most important things that we get from plants and trees because it is the gas that we breathe in. And these oxygen are produced by plants and trees. Next, write 5 uses of leaves. यहाँ पे आपको leaves के 5 use लिखने हैं. तो कुछ ऐसे leaves होते हैं जिनमें medicinal properties होती है, तो leaves का use medicine के लिए भी होता है. Next is for aroma. Aroma is fragrance. कुछ ऐसे leaves होते हैं जिनको हम खुशबू के लिए अपने food में add करते हैं. Yes. Next is for worship. पूजा में भी हम लोग बहुत सारे ऐसे लीफ होते हैं जिनको हम यूज करते हैं. लाइक तुलसी हो गई, तुलसी के पत्ते हो गए, बनाना लीव्स हो गए. नेक्स्ट इज फॉर डेकोरेशन. अशोका ट्री के जो पत्ते होते हैं और आम के पत्ते होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेशन में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एज वेजिटेबल्स. कुछ ऐसे भी लीफ होते हैं जो वेजिटेबल की कैटेगरी में आते हैं, उनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं. फॉर एग्जांपल spinach is very common example of leaf that comes under the category of vegetables. This way you have to go through the exercise and you will find it really useful. Yes, these are the extra exercise. And in the last I have attached one worksheet also in the following link. You may go through that worksheet and you can assess yourself that how much you have understood from the chapter and from this exercise. Yes, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया
तो like, subscribe और share जरूर करें. I will be back with some new chapter, with some new explanations. That's all for today. Thank you. See you again.